Let's wait for 7 to 8 minutes more, then we will start the session. Okay, so let's start this session. So here are some ground rules for this session. Please mute yourself. Use chat box for any queries.
Feel free to turn off your video. We don't mind. And please don't spam in our chat box. Let us know if you are having issues with the audio and video quality. And you got your questions, shoot them at FAQ session. So I welcome you folks to the Android Study Jam info session presented by Google Developer Students Club, Government Engineering College, Bilaspur. Before we get started, let me introduce myself to all of you because I will be your facilitator for the ongoing Android Study Jam program. I will be in touch with you throughout this journey. So, hello everyone, myself Domendra Sahu, GDSC lead of Government Engineering College, Bilaspur. So, let's begin with our info session. Here are some equipment requirements for this Android Study Jam session. The most important piece of equipment is a laptop, PC, or a computer. While installing Android Studio, there are system requirements that you should keep in mind. And on your computer, you have the latest version of Android Studio installed. The second one is the internet connection. Your internet speed should be up to 2 Mbps around. And the third would be a completely optional and Android device, just like your smartphone or any kind of secondary devices with the Android operating system and a USB cable. And let's move to the next slide. So here is the specification for your Windows computer. 64-bit Microsoft Windows 8, 10, or 11, x86 CPU architecture, second generation Intel Core or a newer processor. After that, if you are using AMD CPU, then your CPU should be support of the Windows hypervisor, and 8 GB RAM would be more than enough. If you want to install the software, then you need a disk space. The minimum space for this software is 8 GB, and the minimum screen resolution of 1280 by 800. So let's move to the next slide. What are Android study jams? Android study jams are community organized study groups for people to learn how to build Android apps using online training courses provided by Google. Even if you are new to programming, you can join this program, and we will beginning with very fundamental of the Kotlin. The program is well packed with practical uses of Kotlin. At the end of the program, you will apply all those concepts which you have learned throughout this session to build an app. In this program, you will also learn how to use Android Studio. The best thing about this all our session or the program is it's completely free. This program is already started from 29th of November, and it will continue till the 10th of January 2022. So let's move to the next slide. And so we are using Kotlin programming language to write code throughout this program. It helps developer to be more productive. And why Kotlin? First benefit of using Kotlin is quick and easy setup. You all know that the earlier developers were required to utilize a plugin to add Kotlin in their Android app development projects or the Android Studio. But now there is no such requirements. With the newer version of Android Studio, you can use the inbuilt feature of support Kotlin development package. The second one is the open source advantage. Well, another benefit of choosing Kotlin as your programming language, that is an open source programming language, it will take less time to convert your existing Java code to the Kotlin. And the third one is a popular commercial programming language. So Kotlin chat apps have been gaining a lots of popularity in present times, all thanks to the extreme efficiency of this programming language. And this is the reason why more and more third-party SDK providers are coming with Kotlin Chat SDK. The fourth one is super easy to learn. The Kotlin programming language is super easy to grasp for Android app developers. No doubt that Kotlin is better version of Java. It is easier to create classes and syntax with Kotlin. The fifth one is the level up performance. A Kotlin app will run faster because of its code structure. Kotlin has a wide range of features such as parameter values, extension function, object declaration, and many more that can help you with your daily app development tasks. So let's move to our next slide and talk about Android Studio. So we'll be using Android Studio for creating app throughout this journey. And the Android Studio is the official tool to build Android apps. In the upcoming session, we will be seeing a hands-on demo by using this software. And I will also tell you how to install this software on your system.
So there will be two tracks, just like 30 days of Google Cloud program. So किसने किसने अपने स्वैग्स ऑर्डर कर लिए हैं गूगल क्लाउड के, चैट बॉक्स में आप लोग रिस्पॉन्स करके मुझे बताओ. हेलो. वेरी गुड दिप्तांशु, प्रवीण, यश, अंजलि, congratulations all of you. And let's get back to our Android Study Jam track. So there will be two tracks. The first one is new to programming and the second one is prior programming experience. New to programming track will cover the completely basics of creating Android applications, and the prior programming experience track will cover the more fundamental concept of creating an application. So let's see new to programming course. New to programming course is basically Android basics course. If you are a new to programming, then the Android basics in Kotlin course will show you how to build a simple Android apps using the Kotlin programming language. Here are some prerequisites for this course. You have to basic computer literacy and basic math skill. Curriculum we use in this session will be, let's see. So this is the Android basics in Kotlin's home page, where you can see various kind of units just like Kotlin basics, layouts. We will be discussing in upcoming slides. So let's move to the next slide. So in this section, what will you learn? Or in this course, what will you learn? So in the first batch, you will learn introduction to Kotlin. After that, in second batch, you will learn how to create your first Android app. In the third batch or a third pathway, you will learn how to build a basic layout of the app. In the fourth batch, you will learn how to add a button in an app. Let's move to the next slide. And if you in fifth batch, how to get a user input. In the sixth batch, you will learn how to display a scrollable list. In seventh batch, how to navigate between screens. In eighth batch, you will learn how to use navigation components. In ninth batch, you will learn architecture components of the Android Studio or Android programming. In the 10th batch, you will learn advanced navigation examples. In 11th batch, you will learn coroutines. In 12th batch, you will learn how to get data and display data from the internet. In 13th batch, you will learn introduction to SQL, Room, and Flow. How to use Room for data persistence. In 15th batch, you will learn schedule tasks with the work manager. So this is the basics course. After that, let's see prior programming experience package. So it will look like this. In prior programming experience track, you will learn about the fundamental programming language, about the Kotlin. You will learn about the basically UI layouts, app architecture, data storage, connecting to the networks in an advanced level. Its prerequisites are prior programming experience in object-oriented programming language, just like Android Basics वाला. और इसके बाद second जो है familiar with the how to use an IDE, and the third with familiar with GitHub. Curriculum is used in this course is we can start off with the Kotlin cons and Kotlin cons exercises to become familiar with the Kotlin syntax and its features. If attendees are always already familiar with the Kotlin programming language, so they can skip this step and directly jump into the Android Kotlin fundamental courses. So let's see the Android Kotlin cons first. Second. So this is the Kotlin cons window or a home page. We will discuss in upcoming sessions. And this is the Android Kotlin fundamental course. It will look like just basics course. So there are badges if you want to explore their pathways, etc. So let's move to the prior programming experience tracks. Next slide. So
If you are starting this course, then you have to do some prep work, just like Kotlin cones. If you are already done, then you should skip this. After then, the first batch will be the build your first app. The second batch will be the build an interactive app. The third batch will be the build an interactive layout through this advanced prior programming experience track. And the fourth batch will be the navigation menus. Fifth will be the activity and fragment life cycles. Sixth will be the architecture and components. Seventh will be the database and recycler view. Eighth will be the connect to the internet to your apps, and the ninth will be the repository and work manager. And last but not the least, in 10th batch, you will learn how to design for everyone, and you will learn much more. So let's discuss about the pathway. I think that after the 30 days of Google Cloud program, you guys are all familiar with the tracks, quests, labs. Similarly, in study jams, we have tracks, units, and pathways. Sounds like पहले का भी सुना होगा, ऐसा टाइप का लग रहा होगा. In Android study jams, in each tracks have some units, and each unit has made of two or three more pathways, just like track, quest, and labs. After the completion of each pathway, you have to give a quiz. This is a basic quiz to test your understanding about the concept of the Kotlin. There are no limits to the number of the retries for the quiz, but if you are get question wrong, try to understand what concept is. और अगर आपको लगता है कि फिर से वापस जाके कोर्स में देखना, तो आप जाके देख सकते हो. So let's move to the next slide. After passing every pathway, you earn skill badges like this, just like 30 days of Google Cloud. So let's discuss about the Google Developer Profile, जो कि सब लोग फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा गलती कर चुके हो. उसका मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि कैसे करना है. So here is the example of Google Developer Profile. This one is the short URL of the Google Developer Profile. If you click here, then it will redirect to you a profile. It will take some time to load. So in Google Form, many of you have filled this link, but you have to fill this link. Why you need a Google Developer Profile? So if you want to participate in Android Study Jams, then you need to create a Google Developer Profile. Because we have an API to track your performance throughout this Android Study Jam journey. And the most important thing is that your published profile should be public. And go to this URL, g.dev/new, to create a new profile. One second. I have already created my Google Developer Profile. If you haven't created yet, simply go to this URL, g.dev/new, then simply fill the information and you will good to go. So let's move to the next slide and see app submission criteria. So we have to submit an app on behalf of our campus. There will be only one app for each campus. If your app will be selected, then you will be representing our community in the international level platform. One app for each campus. Here are some guidelines. One app for each campus. Primary language must be Kotlin. App should be contains at least 3 activities and screens. Tech stacks to be used are the ones who learned in during the Kotlin courses. It will be either the basics or the advanced. So let's move to the next slide and talk about what rewards you will get. Virtual badges on Google Developer Profile on the completion of each unit of this course. Certificate of completion signed by me after completions of basics in Kotlin and prior programming experience track. You will get only one certificate. Selected app will be showcased in blog format on social media platform of Google. So if you want to start the Android Study Jam journey, so simply go to g.co and /Android/study jams. The main homepage should be look like this. This is the main homepage of Android Study Jams. Arvas, can you please share the link in chat box?
Yes. Okay, let's get back to the main session. So if you have any questions, queries, then simply DM me or DM to Arvaz or Tarun for support, and follow us on various social media accounts like DSC GCBSP, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. You can write us on dscgcbsp@gmail.com. And if you want to become a member or a part of our GDSC team, or if you want to invite your friends, then simply go to this link bit.ly/dscgcbsp underscore join. And thank you for joining this session. Now we are open for FAQ. किसी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन होगा तो। सर स्टार्ट कहाँ से करना है, वही वेबसाइट से जो आपने हमें बताई? हाँ यश, यार यश तुमने अपना प्रोफाइल गलत भरा था यार, मैंने देखा था, चेक किया था तो। मैंने वही प्रोफाइल डाली थी, नहीं g.dev/यश होकर के नाम से ही था। नहीं नहीं, वो नहीं डालना है, वो फुल जो यूआरएल है ना। अच्छा अच्छा, फिर से फॉर्म मैं, भरूँ क्या मैं फिर? हाँ फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। मैंने बोला कि एक मिनट में बता देता हूँ, उनको अच्छा किसको अच्छा, डालना मैंने ये है नीचे वाली फॉर्म ये। भरी है। हाँ, तो अच्छा ठीक है आपको ठीक। ये वाला जो है ना लिंक डालना था, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। developers.google.com प्रोफाइल, ये वाला। ओके। हाँ। मोस्टली लोग ये वाला डाल के ना गलती किए हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि एपीआई है ना, तो उसमें इस लिंक को हम लोग डालेंगे तो ये जो बार बार रिडायरेक्ट करेगा, तो आप लोग का जो डेटा है ट्रैक नहीं कर पाएंगे हम लोग। मेन रीजन ये फुल जो यूआरएल डलवाने का। अच्छा, ऊपर वाली यूआरएल डालनी पड़ेगी ना? हाँ हाँ, जो हाँ आपका सर्च ओके बार ओके। में है ये वाला। हाँ हाँ। और जिन लोगों ने मिस्टेक कर चुके हैं उन लोग फिर से फॉर्म भर दो। शायद एडिट का ऑप्शन दिखा रहा होगा कहीं पे, यानी तो फिर मैं उसको ओपन कर दूंगा इस सेशन के बाद। और किसी कुछ पूछना है पूछ सकते हो एंड्रॉइड स्टडी जैम से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग और सेशन अभी कराएंगे हैंड्स ऑन का, कि जस्ट इंडक्शन सेशन था। अच्छा, एक और चीज़ कि जितने भी आरएसटीपी या फिर जितने भी फॉर्म्स फिलअप किए हैं एटलीस्ट उनको प्रेजेंट रहना चाहिए, लेकिन स्टिल दे आर नॉट हियर, सो प्लीज ट्राई टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स दैट इट इज एन इंडक्शन प्रोग्राम एंड यू हैव टू बी देयर। ओके सर। हाँ दीप्तांशु बोलो। सर जैसे मींस हम लोग जो लिखा है कि पार्टिसिपेट, सॉरी, वन कैंपस फॉर वन ऐप, तो मींस व्हाट टाइप, हम लोग किस टाइप का ऐप बना सकते हो? क्या एक्टिविटीज उसमें होनी चाहिए? जो लिखा है 3 एक्टिविटीज एंड स्क्रीन्स। 3 एक्टिविटी बेसिक्स यार, उसमें जैसे कि आप ऐप ओपन कर रहे हो तो जो दिख रहा है वो, उसके बाद ऐप के जो फ्रंट में दिख रहा है वो, किसी बटन को क्लिक कर रहे हो उसके बाद जो दिख रहा है वो, बेसिक्स एकदम। और एक्चुअल में हम लोग जो है काइंड ऑफ कंपटीशन टाइप का ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। जिसका भी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट होगा ना, उसका जो भी प्रोफाइल रहेगा, हम लोग के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके फोटो के साथ, और उसके गिटहब का जो भी उसका रैपो रहेगा उसके साथ जो हम लोग शोकेस करने का प्लान कर रहे हैं। तो फिर होपफुल आप लोग जो है अपना योगदान हमें प्रदान करें और एप्लीकेशन जितना ज्यादा हो सके सबमिट करो। यहाँ से हमारे कॉलेज से और फिल्टर होके सिर्फ एक एप्लीकेशन जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग अपना एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हो। अगर आपका जो एप्लीकेशन है टॉप नॉच का रहेगा तो आप ही का एप्लीकेशन जाएगा। यस सर। वेबसाइट नेम अगेन, ओके, मैं आपको लिंक ही शेयर कर देता हूँ भाई प्रवीण। परवाज, वेबसाइट का हाँ। 1 सेकेंड। सर वो फॉर्म में कॉलेज नेम डालना रहता है, हाँ तो हाँ, उसमें हम अदर कॉलेज डालेंगे ना?
डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फॉर्म सबमिट कर दिया था। हाँ हाँ ये वाला लिंक भी ट्राई करके देख लेना। किसी को और कोई क्वेश्चन? किसी का और कोई क्वेरी हो तो बता दो, या फिर अगर थ्रू आउट जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो आप लोग हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्कॉर्ड में भी हम लोग, व्हाट्सएप के थ्रू, और हमारे सोशल मीडिया जितने भी, लिंक्डइन, फेसबुक, जो भी हो, आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट हम लोग को भी कर सकते हो। ओके। मोस्ट ऑफ द लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर है शायद। कैसे यश? हाँ सर है। ठीक है, फिर सेशन एंड करें क्या? आप लोग को कोई क्वेरीज नहीं है फिर? सॉरी सर। सर मतलब मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन हुआ, तो आप एक मतलब समरी बता पाएंगे क्या कि क्या होना है, क्या हुआ करके उसका? समरी ये है आयुष कि जो एंड्रॉयड स्टडी जैम्स है वो 29th ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो गया है 10th ऑफ जनवरी तक के। आपको जो है 2 ट्रैक्स मिलेंगे एंड्रॉयड स्टडी जैम्स में, एक न्यू टू प्रोग्रामिंग और जो दूसरा ट्रैक है वो प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। इन दोनों कोर्स को करने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट्स मिलेंगे हम लोग की साइड से, और आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बैजेस मिलेंगे पूरे थ्रू आउट कोर्स को करते करते। यहाँ पे कहीं पे बीच में क्वेरीज आ रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, तो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। और लास्ट में ये है कि आप अपना ऐप बना के सबमिट करोगे हम लोग को, और हमारे कॉलेज से जो भी बेस्ट एप्लीकेशन रहेगा वो जाएगा गूगल को, और गूगल के पास जो है वो लिस्ट होगा कि एप्लीकेशन अच्छा बना है कि नहीं बना है। उसके बाद जो है अगर बेस्ट रहेगा तो उन लोग अपने वेब ब्लॉग वाला या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसमें अपडेट करेंगे वो लोग कि इस डीएससी से इस पार्टिसिपेंट्स ने ये वाला एप्लीकेशन भेजा है बना के, ऐसा करके। तो वहाँ पे आपको जो है इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ये चीजें हैं। थैंक यस सर, थैंक यू सो मच सर। और एक चीज और कि पूरा कंप्लीटली फ्री है। यस सर। आयुष, और कोई क्वेश्चन? नो सर। और सेशंस आगे होंगे, उसमें भी आप सब पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट रहेंगे, जो भी कोर्सेज के रिलेटेड डाउट रहेंगे या फिर जो भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड। एंड ट्राई टू बी यूनिक इन एवरीथिंग। जैसे कि आप लोग भी ऐप बनाएंगे तो कोई स्पेसिफिक आइडिया ढूंढें, कुछ अच्छा बनाने का कोशिश करें ताकि तुम आप लोग का रैंक हो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।